સંસારમાં ગુરુની મહિમા બતાવી છે, સંસારીઓની મહિમા બતાવી છે. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ભગવાનની કૃપા હોય તો ગુરુ મહિમા બતાવ્યો છે. મહાદેવજી પ્રગટ થયા છે. બ્રહ્મા અને નારાયણ એ બંને સામા આવ્યા. બ્રહ્માજી જૂઠું બોલ્યા, કથા ભલી ભાતી જાણો છો. મહાદેવજીએ પોતાના જીવનનો પહેલો અંશ અવતાર જેનું નામ છે વીરભદ્ર, વીરભદ્રને પ્રગટ કર્યો છે. અને વીરભદ્રએ બ્રહ્માજીનું 5મું મસ્તક ઉચકીને ફેંકી દીધું છે. મસ્તકને કાપ્યું. અને વળી શેનેથી કાપ્યું? ટચલી આંગળીના નખથી. ટચલી આંગળીના નખથી બ્રહ્માજીનું 5મું મસ્તક કપાણું. બ્રહ્માજીને ઘણો પ્રાયશ્ચિત થયો છે. વિષ્ણુ ભગવાને પહેલેથી ક્ષમા યાચના માગી જ લીધી હતી. બ્રહ્માજીનો તિરસ્કાર મહાદેવજીએ કર્યો છે. શ્રાપ પણ દેવાણો કે બ્રહ્મ થઈ અને તમે જૂઠનો આશ્રય લીધો એટલા માટે મારો શ્રાપ છે. ભારતમાં ક્યારેય તમારી ક્યાંય પૂજા નહીં થાય. મહાદેવજીએ તો પહેલેથી શરણાગતિ ભગવાન નારાયણને આપી જ હતી. બ્રહ્માજીએ પાહિમામ 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 કર્યું છે. કેતકીના પુષ્પનો પણ અનાદર મારા મહાદેવે કર્યો છે. સાક્ષી તમારે કોકની પૂરવી હોય ને તો સાચાની સાક્ષી પૂરજો. કદાચ જો કોઈ ખોટા વ્યક્તિની સાક્ષી પૂરજો, મારો મહાદેવની નજરમાંથી કોઈ બચી નહીં શકે. દંડના ભાગી આપણે પણ બનશું. કેતકીએ પણ ક્ષમા યાચના માગી છે. આ તો મારો કરુણાનો કરનારો છે. અકારણ કૃપા કરે મહાદેવ. બ્રહ્માજીને ક્ષમા યાચના કરી. બ્રહ્માજીની ભૂલ એમને ખબર પડી અને બ્રહ્માજીને કીધું કે મારા મુખમાંથી જે શ્રાપ નીકળ્યો એ શ્રાપ તો સત્ય થઈને રહેશે, પણ ક્ષમા યાચના તરીકે ભારતભરમાં એક મંદિર તમારું પણ હશે. જે પુષ્કર રાજસ્થાનની અંદર મારવાડમાં જે પુષ્કર છે એ પુષ્કરમાં બ્રહ્માજીનું એક મંદિર છે. બીજો વરદાન એવું આપ્યું, જ્યારે જ્યારે કોઈ ભી વ્યક્તિ યજ્ઞાદિ કરશે ત્યારે યજ્ઞનો ભાગ બ્રહ્મત્વ તરીકે તમને હાસિલ થાય છે. માફી માંગી પછી આટલું મળ્યું. આ બાજુ કઈક ઘટના એવી બની कि जो वीरभद्र नामक भगवान महादेव का अंश अवतार है, भगवान महादेव का ही प्रतीक है, उसने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक तो निकाल दिया, काट दिया, लेकिन मस्तक ने उसके हाथ को पकड़ लिया, वो नीचे नहीं गिर रहा। वीरभद्र परेशान हो गया, प्रभु ये मस्तक मेरे हाथ से चिपक गई, अब मैं क्या करूं? महादेव ने करुणा की और वीरभद्र को आदेश दिया कि भारत की हर तीर्थ में तू जा, तीर्थ का दर्शन कर, जहां पर ये मस्तक गिरेगा वहां से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोले भगवान ये सब बात तो ठीक है, मैं यात्रा भी कर लूंगा, मगर ये मस्तक चिपका क्यों ये तो बताओ, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। महादेव जी ने बड़े उदारता से कहा कि हे वीरभद्र, तूने जिसका मस्तक काटा वो खुद ब्रह्म है, और ब्रह्म का मस्तक तुमने काटा, इसीलिए ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे हाथ में लग गया है, इसीलिए तुम्हें तीर्थों का दर्शन करना पड़ेगा, और जहां भी ये मस्तक नीचे गिर जाए समझना तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। भारत भर में वीरभद्र नामक गण हर एक तीर्थ में गया
हर एक तीर्थ में महादेव जी का दर्शन किया। दर्शन करते 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 अंत में वो काशी नामक नगरी में आया है, जहां पूरे काशी नगरी मेरे महादेव के त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। काशी में आया, काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन किया और उसी क्षण उसके हाथ से ब्रह्मा का मस्तक नीचे गिर गया है। काशी की ये महानता शिव महापुराण का महात्म्य की कथा में मुझे और आपको प्राप्त होते हैं। काशी की भी महिमा बहुत बड़ी है। काशी के अंदर आप गए तो आपको पता होगा, वहां पर 80 घाट है, गंगा जी का तट है। वैसे तो 84 घाट बोलते हैं, मगर 80 घाट की महिमा काशी में बताई है। मगर अमुक काल के बाद कुछ घाट बन गए होंगे शायद, मगर शिव महापुराण में काशी की 80 घाट की कथा, 80 घाट की महिमा बताई है। और 80 घाट में से एक घाट जिनका नाम मणिकर्णिका घाट है। हमारे हिंदू सनातनी धर्म के अंदर एक परंपरा है कि हम सूर्य नारायण की हाजिरी में अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम सूर्य की साक्षी में उसका अग्नि संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। मगर संतों ने बताया कि काशी के अंदर कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता, क्योंकि जहां मेरा महादेव निवास करता हो, जिसके सर पर चंद्र का तेज सवार हो, वहां पर सूर्य का अस्त कैसे होगा। इसलिए वहां मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे अग्नि संस्कार स्मशान में जलता रहता है। एक भी मिनट ऐसी नहीं, और आज से नहीं, कई सालों से, हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही। कभी वहां कभी किसी की भी चिता ठंडी नहीं हुई। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई चिता आती ही रहती है। और काशी में मेरा महादेव का ठिकाना कहां पर है? मणिकर्णिका घाट में, क्योंकि ये तो स्मशान में रहने वाला जोगी है। स्मशान का एक अर्थ है जो दुनिया में सत्य, सनातन धर्म में जो भी सत्य है वहां पर मेरा महादेव का ठिकाना है। और दुनिया में स्मशान से ज्यादा सत्य और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आज नहीं तो कल हमें जाना तो वही है।